अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं कश्मीर एज का ऑफिशियल लाइव प्लेटफॉर्म साहिल नज़ीर वाणी के साथ। नाज़रीन, आपको बता दें, आज वर्ल्ड नो टोबैको डे पूरी दुनिया में मनाया जाता है। हालांकि जब हम टोबैको की बात करते हैं, कितनी सारी लाइफ इसने तबाह की है और अक्सर सिगरेट पैक्स पे भी लिखा हुआ होता है से नो टू टोबैको। तो इसी चीज को लेकर आज यहाँ पर पायनियर इंस्टीट्यूट ऑफ लर्निंग के स्टूडेंट्स ने यहाँ पर ये प्रोग्राम ऑर्गेनाइज किया है। यहाँ पर कुछ ब्लूमिंग बर्ड्स है पायनियर इंस्टीट्यूट ऑफ लर्निंग के, इनसे हम बात करेंगे। जी बेटा, आज के इस दिन के बारे में बताएं। So this is me, Mahin Kadri, nice. from Pioneer Institute of Learning. So today we are celebrating, not even celebrating, we are just lamenting the day, the World No Tobacco Day that is celebrated on 31st May. And this smoke is a threat to the mankind actually. This is the threat, and we humans ourselves are killing ourselves by smoking, and this smoking. Even we can see the smoking package. There are written that the smoking causes cancer, and here the Pioneer Institute of Learning has made a rally about smoking, and you can see here I have made a chart also here. Wait a moment. So very beautiful chart made by this student. The door to death causes लंग डिजीज, ब्रेन डिजीज, हार्ट डिजीज, टीथ डिजीज। तो कई सारी बीमारियां फैल जाती है जब हम टोबैको की बात करेंगे। आप यहाँ पर देख सकते हैं इन अ ब्यूटीफुल मैनर, यहाँ पर इन्होंने ये रैली ऑर्गेनाइज की है और कई सारे स्टूडेंट्स हैं जिनसे और हम बात करेंगे। वर्ल्ड नो टोबैको डे, नो स्मोक, स्मोकिंग किल्स योर बॉडी ऑर्गन्स। सो वी हैव विद अस वन मोर स्टूडेंट। जी, अपना नाम और आज के इस प्रोग्राम के। My name is Afreen Javed and I'm a student of Pioneer Institute of Learning, which is located near Hanjavera Padar. So today we all have mustered in a rally, and the main theme of this rally is to spread acumen regarding the tobacco. As we all know that the World Health Organization established in 1987 the celebration, the occasion to celebrate the World No Tobacco Day, or also known as Anti-Tobacco Day. We have just gathered to spread awareness, to spread acumen to the people that tobacco is threat to human life. It is ominous for humanity. It not just destroys, it's not just jabbers one life, it jabbers families, it jabbers communities, it destroys entire humanity. So we must be aware about this too, that we must no longer be oblivious that the tobacco that we are consuming, it causes lung cancer, it causes cardiovascular cancer in humans. So why are we consuming it? Just for the false purpose of dopamine. Tobacco contains nicotine that is just dangerous for human life. It contains carbon monoxide that makes a person that just takes away the precious thing that is life from a person. So it is nothing but ominous for humanity. It is threat to humanity. So thank you very much. She was one of the student of Pioneer Institute of Learning. You can see exclusive in the visuals. It's never too late to fight smoking. Say no to tobacco. You can see in the visuals how beautifully these students have made the banners and are providing the awareness in the society. Say no to tobacco, say no to tobacco, so no to tobacco. It's a World No Tobacco Day. You can see. Yes to life. तो नाज़रीन, यहाँ पर आप देख सकते हैं कि पायनियर इंस्टीट्यूट ऑफ स्टूडेंट्स के जो ने आज यहाँ पर ये रैली ऑर्गेनाइज की है, इनका यहाँ पर बुनियादी यही मकसद है कि लोगों में अवेयरनेस फैल जाए कि टोबैको से कितने इंसान की लाइफ को कितना ज्यादा नुकसान होता है। तो यहाँ पर आज इन्होंने एक अच्छा इनिशिएटिव लिया है और जिसमें ये बच्चे ये भी बोल रहे से नो टू ड्रग्स एंड से नो टू टोबैको, से नो टू टोबैको। यहाँ पर इन्होंने ये रैली ऑर्गेनाइज की है एक उम्दा तरीके से और आप यहाँ पर देख सकते हैं कि कितने बच्चे इसमें यहाँ पर पार्टिसिपेट कर रहे हैं। तो ये एक अच्छा इनिशिएटिव है जब ऐसे बच्चों में ये इनकलकुलेट हो जाता है इस एज ग्रुप में नो स्मोकिंग को लेकर। हालांकि स्मोकिंग से कई ज्यादा बीमारियां फैल जाती है, लंग्स को लेकर, टीथ को लेकर, थ्रोट को लेकर, हार्ट को लेकर। तो कई सारी बीमारियां फैल जाती है जब हम टोबैको को लेकर बात करते हैं। तो यहाँ पर हम यही मैसेज पास ऑन करेंगे। बच्चों ने भी यहाँ पर कहा कि इससे कहीं ज्यादा बीमारियां फैल जाती है, एक इंसान को चाहे कि वो टोबैको को अवॉइड करे।
हमारे साथ पॉइनियर इंस्टीट्यूट ऑफ लर्निंग का उस्ताद है हमारे साथ, इनसे हम मुख्तसरम बात करें। जी सर, अपने बारे में बताएं। This is me, Ijaz Ahmed, Very nice. and I'm from Nihalpura, and I've been a teacher in this particular institution from last 5 years. And today we have organized a campaign, a procession that is meant to protect our society for this deadly, destruction that has created a lot of problems and turbulence on our society. We are actually educating our students and those who are living in a society. We want to tell them that they have to protect their children from this devastation, from this destruction. Because I have seen a lot of kids who are already in class 5th, 8th, 9th, they have been abusing themselves by this particular drugs. They must shun that particular act. It's a notorious act. We all know that it has created a turmoil in our society. It does not only destroy society, it is annihilating human health. Exactly, I got your point. As a teacher, being as an intellectual teacher, what are your views so that this tobacco will be eradicated from the youth? First, I think the family should be responsible for everything. If we will start educating our kids from the family, like there are many parents who are smoking in front of their kids, so their kids are imitating, they are observing their behavior and trying to implicate that particular act. So we have to protect our kids from our home. Parents should not smoke in front of their kids. They should understand So that. you are once again in a view that there should be a positive counseling between Yeah, exactly. between the parents and the children. Exactly, counseling approach should be taken by the teachers, by parents, and by everyone who is living in this society. I'm talking about you. You are a social activist, you are a journalist, and you are doing a fabulous job. Right now, you have come here, you have spoken to many kids, and you have gotten their views, and you are trying to separate that. This is one of the approach that can be used to protect society from this deadly devastation. So thank you very much. He was one of the intellectual teacher with us. He is also in the message that there should be a positive coordination between the parents and the children. There should be a positive counseling. So at the end, you can see how beautifully World No Tobacco Day. Stop burning yourself. अपने आप को जलाने से रुक जाओ। और यहाँ पर आप देख सकते हैं इस बच्चे ने भी ब्यूटीफुली से घर में जाकर मेहनत की और ये बैनर बनाया है। यहाँ पर ये इसने लंग्स को बनाया है और इसका यहाँ पर यही मकसद है कि लाइफ खराब होती है, लंग्स खराब होते हैं। तो ये थी नॉर्थ कश्मीर के पटन से एक एक्सक्लूसिव अपडेट। थैंक यू वेरी मच एंड थैंक्स फॉर वाचिंग कश्मीर एज ऑफिशियल विद साहिल नजीर भाई। Say yes to life. Say no to tobacco. Say yes to life. Say no to tobacco. Say yes to life.